प्राउड फील हुए मैंने जो नेशनल लेवल रे पार्टिसिपेट करे लाइक गोटे ओडिशा जर्सी पिंधिकी हाई जंप से पॉपुलर नुह ऑल ओवर इंडिया कि तार इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली और सब जगह अवेलेबल नुह से मझे मझे स्पोर्ट्स छाड़ी दिखती लाइक कि जब रिजल्ट न आसला स्पोर्ट्स छाड़ी दिखती मझे छाड़ी दिखती एगेन्स्ट रे गोल्ड जीतवा टिके टफ थिला बट सेटा हो पारला तो बहुत खुशी लगे आ कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होला पूरा रनवे आउ जंप्स पूरा पिक्चर चले मो माइंड रे ये तो स्टार्ट करी कहीं छाड़ी in front of our family and friends we are always the same. Whether you are a national champion Hello everyone, I am Lipsita. Welcome to episode 3 of The Dugout, where today we have an amazing player with us who recently clinched the gold medal at the first National Indoor Athletics Championships 2026 that took place in Kalinga Stadium, Bhubaneswar. He became one of the first major gold medalists in high jump for Odisha and is none other than Swadhin Kumar Majhi. Hello Swadhin, welcome to The Dugout. How are you? Good. Everything is fine? Yes. Like as I said in the introduction that recently you got a gold medal and it was one of the major medals for Odisha till now in high jump. So how does it feel when you hear the word national champion before your name? बहुत भल लगला जते बेले स्टूडेंट गोल्ड आसला ताठू बेसी गोटे प्राउड मोमेंट थिला लाइक के से इवेंट रे जने वर्ल्ड बेस्ट 6th हाई जंपर थिले एक मो आइडियल सर्वेश को सारे तो तांको एगेन्स्ट रे गोल्ड जीतवा टिके टफ थिला बट सेटा हो पारला तो बहुत खुशी लगे आ कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होला So you won the gold medal that time. I was present and I saw it, and after you made the score, was there a moment when it felt like no, I have done something this time? हाँ आफ्टर नेशनल इंडोर जेहेतु कॉन्फिडेंस लेवल भी टिके बूस्ट होला तो जहाँ लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस आम सीजन एंड रे देइथिलु सेही परफॉर्मेंस आम सीजन स्टार्टिंग रू करवा स्टार्ट करदेलु आउ एशियन गेम्स रे क्वालिफाइंग 2.19 इंडोर रे 2.18 करवाला गोटे सेंटीमीटर फरक तो मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट अच्छु कि एशियन गेम्स क्वालिफाई करिवो. If we dive a little deeper into your life journey, then like in India, high jump is what I have seen is never considered a career among the children, among the people who perform high jump. So was it a plan from always that you will do high jump, or something made you do that? चले हाई जंप से पॉपुलर नुह ऑल ओवर इंडिया कि तार इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली और सब जगह अवेलेबल नुह आ लोक ता विषय एते जना भी नुह कि या करियर भी बिल्ड कराई पार आ लोक भीतर पेशेंस भी नुह कि किसी हो पार या भीतर कौन मैंने ये टाइम टेकिंग ये तो टेक्निकल इवेंट तो टिके टाइम टेकिंग आ मते लगे कि मुझे करी तो मुझे स्टार्ट कली. So in every athlete's life there is always an idol who they adore, who is the source of motivation for them, and I think you do surely have one or more. So who are your motivations in your life? मोटिवेशन अलग अलग रीजन पे अलग अलग लोग अच्छा जमती कि कंसिस्टेंट अच्छा सर्वेश को सारे लास्ट 7 years से अनबिटेबल सी मो मोटिवेशन इंजुरी रू कम बैक करके रिकवर करके कम बैक करके नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर अमिया मल्लिक सी भी मो मोटिवेशन. तो तांको देखले लगे कि लाइक कि आमर भी जहाँ भी केतबेले केमती इंजुरी होचे तो बहुत छोट तांकर से प्रॉब्लम आगे
तो हमको मोटिवेशन मिले। Being into sports, everyone knows who is a genuine sport lover, that athletes life is not a simple or easy life, and they do face many hurdles in their journey, and they have their setbacks in their journey. So was there ever a moment for you when it felt like giving up, you can't do anymore? हाँ सेमती भी है बिफोर कोविड मोर एंकल इंजुरी होता ड्यूरिंग कोविड पीरियड रे आम किसी ट्रेनिंग भी किसी कर पार एंकल इंजुरी प्लास्टर भी है ट्रेनिंग भी किसी करें वेट गेन हो गला पूरा लाइक कि एबव 80 किलो तो मुझे भाभी भी नी कि मुझे पुणी थे स्टार्ट करी जिते बड़े डे बाय डे टिके लॉकडाउन हटिला तो धीरे धीरे करके स्टार्ट कली लगे कि ना मुझे गिव अप करी जेहेतु मुझे स्टार्ट करी कहीं छाड़ी। So whenever you are in a competition and you are performing the jump or something like that, before that moment there are some time when many things goes in our mind. Yes. So when you attempt a jump, before Yes. that, before few seconds, what goes on in your mind? पूरा रनवे आउ जम्प्स पूरा पिक्चर चले मो माइंड रे कि जाऊँ रनिंग कर टेक ऑफ मारली क्लियर कली पूरा पिक्चर माइंड रे पूरा सेट हुए आग माइंड रू पूरा बार क्लियर कला पर जाएगी निजे क्लियर करे। And is there like how concentration matters when you are attempting a jump? बहुत जदि किसी जदि रनवे ठिया है कि जड़े जदि डबल माइंडेड रहा लाइक जदि कन्फ्यूज रहा कि मुझे करी ना करी से करी 100% कॉन्फिडेंट रहा पड़ो। So you are representing Odisha on national stage and of course your country at an international level. So since many years Odisha has been producing various amazing athletes. So how proud are you to represent Odisha and what will be your message to the young athletes who are coming after you? जो मुझे स्टार्ट करी मोर इच्छा था दिने ओडिशा को रिप्रेजेंट करी तो एबे करुचे तो प्राउड फील हुए माने जिते नेशनल लेवल रे पार्टिसिपेट करे लाइक गोटे ओडिशा जर्सी पिंधिकी से जो मैंने अन्य एथलीट मान को देखुलु कि जर्सी पिंधि ओडिशा जर्सी कि इंडिया जर्सी कि निज डिस्ट्रिक्ट भी जर्सी हो बहुत माने इच्छा था सब बेले कि माने आमे भी दिने एमती करूँ आ यंग एथलीट मान को या कहबी कि जदि माने से मझे मझे स्पोर्ट्स छाड़ी दियंती लाइक कि जदि रिजल्ट न आसला स्पोर्ट्स छाड़ी दियंती मझिरु छाड़ी दियंती तो सेमती न करंतु पेशेंस दरकार पेशेंस रहिले तमे कोठी ना कोठी पहुंच जाओ। So it was a great message for our young athletes. Now moving towards your a little bit casual your casual life. So my question to you is, when you are not training, what do you love the most? Like what something that you do and you love it the most? Gardening. Gardening, you love gardening, like flower plants and all. Okay, so you love nature and plants. It's a very good thing. So now as you are a national champion, you have won a gold medal in the national championships. So do your friends and family now treat you differently than they were treating you before? Nah, same. Same? Okay. In front of our family and friends, we are always the same, whether you are a national champion or not. Now we will move towards the fun segment, that is the dugout quick jump rapid fire questions. You have to answer that rapidly. So my first one is, morning training or evening training? Evening. Okay. Gold medal or national record? National record. Favorite cheat meal? Favorite cheat meal, chole bhature. Okay, chole bhature. Music before competition or before competition? Okay. Early bird or night owl? Early bird. Early bird. Olympic medal or world championship medal? Olympic. Dream venue to compete in? Los Angeles. Okay. Favorite Indian athlete? Homi Malik. Okay. One athlete you'd love to meet? Javier Sotomayor. We wish him the best for all his wishes and all he wants to do. So now we have reached to the end of our interview. My last question to you will be, 5 years from now on, how would you like to see yourself? How do you want Swadhin Kumar Majhi to?
Asian Games medalist, as a Asian Games medalist, as a Commonwealth medalist. So you have the dreams to bring medals for your country. Yeah. So I hope that Swadhin surely wins medals for our countries and he sees our national flag shining high above him with the national anthem that plays when he will be receiving the medal. All the best, Swadhin, and thank Thank you you. very much for Thank you. coming into the dugout. Thank you very much. Thank you.